Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are well and watching the videos regularly. And please submit your work on time. Now, in the previous video, we have discussed about living organisms and their surroundings, in which I have told you what are organisms, what are habitat, and type of habitat. Now, in this video, we will do a recap of types of habitat that we have discussed in the previous video. Now, what are the habitat? That is a place where the living organisms survive. Now, the habitats are of two types, that is terrestrial habitat and aquatic habitat. The terrestrial habitat contains the habitat which are on land. So, we have deserts, mountain, grassland, forest, all are a part of terrestrial habitat. In aquatic habitat, we have water bodies, those organisms that survive on water bodies. They are known as aquatic habitats, example oceans and ponds. Now in this video we will do only terrestrial habitat. Now what are terrestrial habitat? The terrestrial habitat is a habitat that is found predominantly on land. Predominantly on land means that the organisms and that they completely survive on land. Okay, because the word terrestrial means land. So in the types of terrestrial habitat we have four types, that is forests, deserts, mountains and grasslands. Now first we will do the deserts. We know what are deserts. Now what are deserts? We know that Rajasthan is in the form of desert. That is Thar desert we have over there. Okay, so desert means a sand dunes related area where the vegetation cannot be grown. Okay, so deserts are defined as a biomes that receives less than 10 inches of rainfall annually. डेजर्ट्स कब बनते हैं? जब वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास डेजर्ट्स हमेशा गर्म हो. सी ऑन द सेकेंड पॉइंट, द कॉन्ट्रेरी टू अ पॉपुलर बिलीफ, नॉट ऑल द डेजर्ट्स आर हॉट. सारे डेजर्ट्स हॉट नहीं होते. वी हैव अनदर डेजर्ट विच इज़ अंटार्कटिका, जहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 2 इंचेस, बट वो हॉट नहीं है. दैट इज़ अ कोल्ड वन. Okay, so Antarctica is regarded as a desert as annual precipitation means rainfall is less than 2 inches. Okay, next, जो भी एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर जाते हैं, मीन्स उसके अकॉर्डिंगली सर्वाइव करना सीख जाते हैं. लाइक वी हैव लिजर्ड्स. सनबाथ नहीं करती. लिजर्ड्स आपकी समर्स में नहीं दिखाई देती है आपको. So animals have adapted to the heat by burrowing or living in caves. या snakes होते हैं आपके. Other animals have adopted to a nocturnal lifestyles. कुछ animals ऐसे होते हैं जो रात को जागना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो दिन की धूप से बच जाते हैं. Where they stay underground during the heat of the day and hunt food in the relative coolness of the night. Like your owl. Owl क्या करता है? दिन में बाहर नहीं निकलता, रात को बाहर निकलता है. That is a nocturnal animal जो रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं. सो what they do is basically वो रात दिन में क्यों नहीं बाहर आते? बिकॉज दिन में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं? रात को हंट करते हैं फूड के लिए. ओके, सो वी हैव कॉमन एनिमल्स surviving in desert areas is like antelopes, camels, fox, gazelles, goats, lizards, wild dogs. These are the cheetah. These are the some of the animals that survive in desert area. Now that was the first type of terrestrial habitat. Now we will see the next terrestrial habitat, that is mountains. Mountains में क्या होता है? हिली एरिया है. So जो भी रीजन है जहाँ पे लैंड फॉर्म थोड़ी राइज कर रही है नॉर्मल लैंड से, that is known as mountains. Mountains are large landforms that rise above the surrounding surface. Typically mountain regions have colder climates. Mountain region का बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है, आप सबको पता है, ड्यू टू हाई एलिवेशन. क्यों? कि वो थोड़ी हाइट पे जाके बने हुए होते हैं. नाउ एज अ रिजल्ट तब वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सर्वाइव करना स्टार्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इन्वायरमेंट में मेंटेन करेंगे. नाउ वी विल डू द अडैप्टेशन पार्ट इन द लेटर वीडियो. फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इन दिस वीडियो. नाउ द माउंटेन एनिमल्स इंक्लूड्स, दैट इज बिग हॉर्न शीप, brown and black bear, grizzly bear, mountain goat and mountain lions. Now we have covered the desert part and the mountain parts. Next we have grasslands. Grasslands means ऐसा एरिया जहाँ पे बेसिकली ग्रासेस होती हैं, ट्रीज होते हैं.
small herbs and shrubs होते हैं. So grasslands are the areas where the most dominant type of vegetation is grasses. And you all know जहाँ पे grasses होते हैं वहाँ पे कौन कौन से animals मिलते हैं, like elephants, giraffes, hyenas, jackrabbits, lions, rhinos, warthogs and zebras. नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज़ अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ पे आपके पास ट्रीज भी हैं, वाइल्ड फ्लोरा भी है, वाइल्ड फौना भी है, श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, ग्रासेस भी हैं. सो फॉरेस्ट इज एक्चुअली अ प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. सो what we have studied in this video is what is terrestrial habitats, types of terrestrial habitat, forest, grasslands, mountain, deserts. Okay, so I hope this video is clear to you class. After this video we will do the adaptation of the terrestrial habitats. Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.